Yeah, welcome back, students. Let's move on to the next set of variance, that is the sales variance. Okay, like the other variances, that is your labor and material variance, which is supposed to be solved in 3 steps. Similarly, your sales variance is also solved in 3 steps. Okay, the only difference between sales variance and labor and material variance is that in step 1 of labor variance, step 1 of labor variance, what were we comparing, students? Yeah, let me just give you a brief about it. Yeah, हम वहाँ क्या compare करते थे? हम वहाँ compare करते थे outputs को. That is, standard output should be equal to your actual output. Correct? Yeah. But in case of sales variance, we will assume not outputs, but we will assume the time. That standard time is equal to actual time. Okay? I repeat, the first step that you're going to check is that your standard time should be equal to your actual time in comparison to the base ratio that we took in material and labor, that was output. Okay, so here the standard time could be for a month or it could be for a year. Okay, and similar to what we did in material and labor, okay, you will have to consider whether it is equal or it is unequal. Okay, so this part will also not change, whether standard time is equal or whether standard time is unequal. Okay, yeah. Then you will be using formulas in step 2, calculation of formulas. So these are your probable sales variance. First is sales value variance, total standard sales value minus total actual sales value. You can resonate this with what we did in labor and material as well. Okay, total standard cost minus total actual cost. So here we will write total standard sales value minus total actual sales value. It is always standards minus actuals. Okay, then sales value variance is further divided into sales price variance and sales volume variance. Okay, so when I say sales price variance, I will be considering standard price, actual price ka difference multiplied with actual sales quantity. Okay, when I come to volume variance, I'll be considering standard sales volume minus actual sales volume into standard selling price. Sales volume variance is further divided into sales mix and sales sub volume variance. Okay, I repeat, sales mix and sales sub volume variance. Matlab, sales value variance is divided into 2 and sales volume variance is divided into again 2A, 2B. It is like this. Okay, so this is a formula to calculate. Okay, yeah. And third step is obviously, students, that you will verify your answer. Okay, तो how will you verify your answer? ये जो मैंने step 2 लिखा है, इसी से आप अपना answer verify करोगे. Sales volume variance should be equal to your sales price variance plus sales volume variance. और आपका जो sales volume variance है, it should be equal to sales mix variance plus sales sub volume variance. Okay, so there are 2 equations that you are going to check. Okay, matlab, how are you going to check? Your left hand side should be equal to your right hand side. Okay, so that is the step for checking. Okay, so let us go to the question. Now in this particular question, we are comparing. Let me get the question back on the screen. Yeah, we are comparing the first thing, yes, you are supposed to calculate is your ये रहा आपका क्वेश्चन. या सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये रहा, इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके, कैलकुलेट द रेलेवेंट वेरिएंस. ना आपको कैसे पता चले एग्जाम में कि ये सेल्स वेरिएंस या मटेरियल या लेबर का सम है? ओके, कैन यू सी हियर बजटेड सेल्स, there are 3 products ABC and actual sales ABC. Okay,
इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सेल्स वेरिएंस का सम है. ओके, दे विल ओनली गिव यू इन द क्वेश्चन कैलकुलेट द रेलेवेंट वेरिएंस. ओके, और इधर देखो सेल्स क्वांटिटी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है. ओके, तो स्टैंडर्ड सेल्स क्वांटिटी, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ऐसा. ठीक है. या so what is the first step that you're going to do is, yeah, so let's come to the first step, students. Yeah, please note down this. First step is assume standard time is equal to actual time equal to a month. ये जो information है ये अप्रैल का है, तो हम अज्यूम करेंगे कि मेरा स्टैंडर्ड टाइम और मेरा एक्चुअल टाइम एक महीने का है. अप्रैल इज 1 मंथ, राइट? सो अगर मेरा रेशियोज इक्वल है, आई मीन अगर मेरा स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम, so I need not revise my standards. Okay, yeah, correct. Yeah, so let's understand. Given standards, standard time 1 month, actual time 1 month. So I will make how many columns? 3 columns. सेल्स क्वांटिटी कॉलम, सेलिंग प्राइस और अमाउंट. क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखो, आपको सेल्स वैल्यू कैसे मिलेगा? सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद सेलिंग प्राइस करोगे तो आपको सेल्स वैल्यू मिलेगा. ओके, ये याद रखना. क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद सेलिंग प्राइस से आपको सेल्स का वैल्यू मिलेगा, मतलब सेल्स इन अमाउंट मिलेगा. ठीक है. या तो वो तो आपको दिया हुआ है, ABC 1200, 800 और 2000, और ये सब एक महीने का इंफॉर्मेशन है, बराबर. ना 1200 इंटू 15 रुपीज सेलिंग प्राइस, तो 18,000. 800 इंटू 20 16,000. 2000 इंटू 40 80,000. तो ये तीनों को ऐड कर दो, प्लस 16 प्लस 18. ओके, सो 1,14,000. ओके, राइट. अभी मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है विच आई एम यूजिंग एज अ शॉर्टकट फॉर रिवाइज सेल्स स्टैंडर्ड मिक्स. रिवाइज स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स. क्यों? क्योंकि वो लोग ने क्या बोला है, कैलकुलेट द रेलेवेंट वेरिएंस. ठीक है, तो ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट है ना, मेरे पास एक प्रोडक्ट नहीं है, एक से ज्यादा है, तो रिवाइज्ड मिक्स, तो स्टैंडर्ड मिक्स तो आए, सेल्स मिक्स आएगा क्वेश्चन में. नाउ हाउ डू यू डू दिस? लेट मी शो यू. ओके, जस्ट लीव दिस column for blank for now. I'll tell you how to fill this up. Then you come to your actuals. Actuals may you have same SQ, selling quantity, selling price, and you will get the amount. Okay, so 880 into 18. Okay, then 880 into 20. Okay, 2640 into 38. ओके, तो मैंने ये m प्लस क्यों लिखा है? बिकॉज आई एम टेलिंग यू टू यूज द शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट में आप क्या करोगे? 880 इंटू 18, वॉट एवर इज द आंसर, m प्लस. देन 880 इंटू 20, वॉट एवर इज द आंसर, m प्लस. Then 2640 into 38, whatever is the answer, m plus. Then you want this final answer, so just press on Calci MRC button. You will directly get this answer, 1,33,760. Okay, so this is how you are going to do your calculation. Is this clear everyone? Okay, एक बार ये हो गया. अब देखो मुझे मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स निकालना है. ठीक है, अब इसके लिए भी एक शॉर्टकट है जो हम यूज करेंगे. रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, सेल्स मिक्स निकालना है. ओके, तो शॉर्टकट क्या है? इट्स वेरी सिंपल. मुझे क्या करना है? मुझे मेरे सेल्स मिक्स को फाइंड करना है, राइट? कि अगर मैं ए और बी प्रोड्यूस करूंगी, बी और सी प्रोड्यूस करूंगी, ए और सी प्रोड्यूस करूंगी, तो क्या कॉम्बिनेशन में या मेरा वॉल्यूम बढ़ने वाला है. ठीक है. Now I am going to find this column. How will you find? The shortcut is, मुझे क्या करना है? मुझे गिवन स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना है. एक्चुअल्स एक्चुअली रिवाइज करना है, गिवन स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना है. तो मेरा गिवन स्टैंडर्ड्स कितना है? 4000. ओके, सो दिस आई विल कीप इन द डिनोमिनेटर and this 4,400 I will keep it in the numerator. Okay, because that's my base, right? Okay, press the equal to sign and multiplication sign 2 times. Okay, so it will be solved. So this is a shortcut that you're going to use. Okay, 4,400, yeah, divide by 4,000
इक्वल टू साइन, मल्टीप्लीकेशन साइन 2 टाइम्स। देन मुझे किसका आंसर चाहिए पहले, 1200 का। So press 1200, see you will get 1320. Then you type 800, you will get 880. You type 2000, you will get 2200. Okay, so this is how you will get your answer. Okay, this will save your time. So this is my step 1 completed. Now let's come to step 2. Okay, so please make a note of this. Step 2 में सबसे पहले हम निकालेंगे, go in the order जो मैंने अभी आपको दिखाया था। या स्टेप 2 में सबसे पहले निकलेगा सेल्स वैल्यू वेरिएंस। ओके, तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस इज व्हाट, इट इज टोटल स्टैंडर्ड sales value minus total actual sales value. Okay, total standard sales value. See this one, please note it down. So it is 1,14,000 minus 1,33,760. So my answer is 19,760. तो कैल्सी आपको नेगेटिव दिखाएगा, पर ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव वेरिएंस है। क्यों ये पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने सोचा था 1,14,000 का सेल्स होगा, ठीक है, बट सेल्स कितने का हुआ, 1,33,760 का सेल्स हुआ। तो मैंने सोचा था 1,14,000 का सेल्स होगा, बट सेल्स तो ज्यादा हो गया, तो मेरे लिए तो ये फेवरेबल वेरिएंस है। तो डोंट लुक इनटू द कैल्सी साइन, अप्लाई योर लॉजिक्स and accordingly put the sign of F and A. Okay, then comes your second variance, sales price variance. तो standard selling price minus actual selling price. ठीक है, इसमें भी सेम लॉजिक है। तो 15 रुपीज मैंने सोचा था सेलिंग प्राइस होगा, बट सेलिंग प्राइस हो गया 18 रुपीज। तो अच्छी बात है ना, मुझे 3 रुपया ज्यादा में बेच दिया मैंने। तो माई आंसर इज 2640, फेवरेबल। डोंट लुक इनटू द कैल्सी साइन, लुक इनटू द लॉजिक्स एंड अप्लाई FNA। सेकेंड वन तो जीरो हो जाएगा, 20 minus 20 इज जीरो। थर्ड वन मैंने सोचा था 40 रुपीज होगा सेलिंग प्राइस, बट सेलिंग प्राइस हुआ 38 रुपीज। 2 into 2640, तो कैल्सी बता रहा है पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव वेरिएंस है। क्यों, क्योंकि 40 रुपए का सेलिंग प्राइस की जगह पे 38 रुपीज सेलिंग प्राइस है, तो कम हो गया। ओके, देन यू हैव टू सॉल्व दिस। तो माइनस प्लस माइनस, करेक्ट, तो 2640। सो माय आंसर इज 2640A. ओके, वाई A? बिकॉज 5280 इज द बिगर नंबर हैविंग द माइनस का साइन, तो उसका साइन मिल जाएगा इसको। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट कम्स थर्ड, द थर्ड वेरिएंस, that is sales volume variance. Okay, sales volume variance. Just taking it. Okay, sales. Here it is, sales volume variance. Sales volume variance, volume is quantity. 1200 minus 800 into 15, 6000. It is 880, I'm so sorry. 1200 minus 880 into 15. So it is 4800 adverse. Don't look into the calci sign. Apply your logics. 800 की जगह पे 880 sold किया, ज़्यादा बेचा ना, ये positive होगा। 1600 F. Okay, 2000 minus 2640, ये भी ज़्यादा बेचा, multiplied with 40,
तो कैलसी बता रहा है नेगेटिव, बट ये है लॉजिक के हिसाब से पॉजिटिव 25,600. ठीक है, प्लस प्लस इज प्लस ओनली एज यू ऑल नो. तो 25,600 प्लस 1,600 माइनस negative 4,800. तो 22,400 F. Okay, I hope this part is clear to everyone. Yeah, that is my sales volume variance. Okay, then next in line is sales mix variance. Yeah. Sales mix variance. Just a moment, that. Sales mix variance. Yeah. Okay, so I just calculated this revised standard mix. Yeah, 1380. 1320 minus 880 into 15. 6,600. It is showing adverse. Obviously, because 1320 produce करना था आपने 880 बेचा है, कम बेचा. सेकेंड वाला 0 है. थर्ड वन 2200 बेचना था, कितना बेचा है? 2640. ज्यादा बेचा है 17,600. ओके, 6,600. तो 11,000 F. Okay, then sub volume variance. Yeah, that is total minus actuals. So 4,000 is my total minus 4,400 into 11,14,000 divided by 4,000. 11,400 favorable. I said don't look into the calci sign because logic says that आपने ज़्यादा बेच दिया. बराबर? Yeah. Then comes your this step 3. You have to verify this your answer. So your LHS should be equal to your RHS. ठीक है, so the first equation is this sales value variance, which is how much? 19,760. How are you going to get this? 2,640 plus 22,400. One is positive, one is negative. So 22,400 minus 2,640. So 22,400. Okay, just a minute. 22,400 is favorable. A matlab minus, so minus 2,640. So 19,760 favorable. So my LHS should be equal to my RHS. Second equation, yeah. Mix variance, sales mix variance is 11,000 F plus 11,400 F. दोनों add हो जाएगा 22,400. Again, my LHS is equal to my RHS. Okay, so this is how the sums are supposed to be solved under sales variance. Okay, till I come up with the next video. Happy learning.